Namaskar. Our collective fight against COVID 19. Everyone is fighting, whatever means one has, but India is blessed with so many ways of fighting a disease. One such means is religious gifts that Indian soil has received from time to time from the divine world. One such source, one such means is Indrakshi Pujanam. Indrakshi Pujanam is an ancient practice in the entire Indian subcontinent. It is related to goddess Indrakshi. Bhavan Shakti Peetham. One Shakti Peetham is situated in Sri Lanka, and this worship is related to that Peetham. Over the years, many millennia, this puja has scattered and reached to far off places, even to Kashmir, even to Afghanistan, Caspian area, and world over in many parts. And it was reformed and edited, re-edited on the basis of one's experience, needs, and aim what to achieve through Indrakshi. Basically, Indrakshi was meant to help Indra first to get rid of the curse. Then, seeing its importance, Narada and Bhagwan Vishnu extended this worship to common man. Since then, it was depicted in various ways, and as on date, Indrakshi has various types of Gayatris, various types of stotras. There is a difference between many ways of Indrakshi recitation that has nothing to do with authenticity, and everything is authentic because going through lots of videos of Indrakshi from so many South Indian, North Indian, and other people on the internet, YouTube, and all other sources. It's okay, but the main thing is it's fight against dreaded diseases. This is the main purpose and our concern of today. So today, when we think of this unknown and most talked of disease, COVID-19, so we can use Indrakshi because of its relation with something unknown. Indrakshi mentions it. There are so many diseases which are mentioned in its Kavacham. Different kinds of fevers, different kinds of diseases, and there are hundreds and hundreds of names. But considering this disease, this puja is most relevant as on date. Like you have Mahamrityunjaya and all other things. This is also a powerful, most powerful puja. So we can use this as well. We can take help of this blessings of divine through this medium as well. So today we will recite it again for the welfare of mankind. Jai Indrakshi. श्री गणेशाय नमः। सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुत्तरजठरं हस्तपद्मे ददानं दन्तं पाशाङ्कुशेषनुरुकरविलसद्बीजं पूर्णविरामं बालिन्द्यौतमौलिं करिपरिवदनं दानपूरार्धगण्डं भोगीन्द्र आबद्धभूषं भजत गणपतिं रक्तवस्त्र अङ्गरागम् ॐ गं तत्पुरुषाय विद्महे रत्नेताय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गं तत्पुरुषाय विद्महे रत्नेताय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गं तत्पुरुषाय विद्महे रत्नेताय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ जपः।
गुह्याज गुह्यगोप्तानं ग्रहाणस्मात् कृतं जयं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् गणेश्वरः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इंद्राक्षी पूजनम्। ओम अस्य श्री इंद्राक्षी स्तोत्र महामंत्रस्य शची पुरंदरस्य अनुष्टुप छंदः। इंद्राक्षी दुर्गा देवता लक्ष्मीर्बीजं भुवनेश्वरी शक्ति भवानी कीलकम् इंद्राक्षी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अंगन्यासः। ओम इंद्राक्षी अंगुष्ठाभ्यां नमः महालक्ष्मी तर्जनीभ्यां नमः माहेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः भुजाक्षी अनामिकाभ्यां नमः ओम कात्यायनी कनिष्काभ्यां कौमारी करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः इंद्राक्षी हृदयाय नमः महालक्ष्मी शीर्षे स्वाहा माहेश्वरी शिखाय वषट ओम अंबुजाक्षी कवचाय ओम काचान्यत्रयाय वौषट ओम कौमारी अस्त्राय फट ओम भूर्भस्वरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम्। नेत्राणां दशविंशतै पर्वतां मत्युग्रचर्मावरां हेमावां महतीं विलम्बितशिखामां मुक्तकेशान्वितां घण्टामण्डितपादपद्मयुगलां नागेन्द्रकुम्भसतिनीम् इन्द्राक्षीं परिचिन्त्यामि मनसा कल्पोक्तसिद्धिप्रदाम्। इंद्राक्षीं द्विभुजां देवीं पीतवस्त्रद्वयान्वितां वामे हस्ते वज्रधरां दक्षिणेन वरप्रदाम् इन्द्रादिविसुरैर्वन्द्यां वन्दे शङ्करवल्लभाम्। एवं ध्यात्वा महादेवीं जपेत सर्वात् सिद्धये इंद्राक्षीं नौमि युवतीं नानालङ्कारभूषितां प्रसन्नवदनां भोजाप्सरोगणसेविताम्। इंद्र उवाच इंद्राक्षीं पूर्वता पातु पातवाग्नेयां दशेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्यां पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्यै नारसिंह्यपि उदीचां कालरात्रि मामेशान्यां सर्वशक्त्याः भैरवोदरं सदा पातु पात्वदो वैष्णवी सदा एवं दश दिशो रक्षेत सर्वांग भुवनेश्वरी। इंद्राक्षी जपः। विघ्नहर श्लोक। मूषकवाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। मूषकवाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। मूषकवाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। इंद्राक्षी कवचम। ओम नमो भगवते इंद्राक्षे महालक्ष्मी सर्वजन वशंकर्यै सर्वदुष्टगृहस्थिन्यै स्वाहा। ओम नमो भगवते पिंगल भैरवी त्रैलोक लक्ष्मी त्रैलोक मोहिनी इंद्राक्षी माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवती भद्रकाली महादेवी कृष्णवर्णे तुंगसुदने शूर्पहस्ते कवाट वक्षस्थले कपालधरे परशुधरे चापधरे विकृत रूपे महाकृष्ण सर्प यज्ञोपवीतिनी भस्मोद्दलित सर्वगात्री इंद्राक्षी माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवती प्राणेश्वरी पद्मासने सिंहवाहिने महिषासुरमर्दिनी उष्णजर पितजर श्लेष्मजर कपजर आलापजर सन्निपातजर कृत्रिमजर गत्याजिजर ऐकायिकजर द्वयायिकजर त्रयायिकजर चतुरायिकजर पंचायिकर पक्षजर मासजर शनमासजर संवत्सर सर्वांगजरान्नाशे नाशे हर हर जहि जय दह द पच पच ताड़े ताड़े आकर्षय आकर्षय विदिश्व स्तंभय स्तंभय मोय मोय चाटय चाटय हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं ओम नमो भगवती प्राणेश्वरी पद्मासने लंबोष्टकंबुकंटिके कालिकामरूपिणी परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र प्रभेदिनी प्रतिपक्ष विध्वंसिनी परबल दुर्ग विमर्दिनी शत्रुकर छेदिनी सकल दुष्ट जर निवारिणी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस यक्ष यमदूत शाकिनी डाकिनी कामिनी स्तंभनी वशंकरी कुक्षिरोग शिरोरोग नेत्रोग क्षयावस्मार कुष्ठादि महारोग निवारिणी मम सर्वरोगान् नाशे नाशे ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं श्रीं घुं तुं इंद्राक्षी मां रक्ष रक्ष मम शत्रून् नाशय नाशय जलरोगान् शोषय शोषय दुःखव्याधीन् स्फोटय स्फोटय क्रूरादीन् भञ्जय भञ्जय मनोग्रंथि प्राणग्रंथि शिरोग्रंथीन् काटे काटे इंद्राक्षी मां रक्ष रक्ष हुं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवती माहेश्वरी महाचिंतामणि दुर्गे सकल सिद्धेश्वरी सकल जनमनोहारिणी काल काल रात्रि अनले अजते अभये महाघोर रूपे विश्वरूपिणी मत्सूदिनी महाविष्णु स्वरूपिणी नेत्रशूल कर्णशूल कटिशूल पक्षशूल पांडुरोग कमलादीन नाशे नाशे वैष्णवी ब्रह्मास्त्रेण विष्णुचक्रेण रुद्रशूलेन यमदंडेन वर्णपाशेन वासवज्रेण सर्वांगेन भंजय भंजय यक्षग्रह राक्षसग्रह स्कंदग्रह विनायकग्रह बालग्रह चौरग्रह कूष्मांड ग्रहादीन निग्रहण निग्रहण राजयक्षमक्षय रोगताप ज्वर निवारिणी मम सर्वज्वर नाशे नाशे सर्ग उच्चाट उच्चाट हुम फट स्वाहा। इंद्राक्षी स्तोत्रम।
इंद्राक्षीणां सा देवी देवैतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानां नित्यविश्रुता कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपा सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णमंगला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटांगी जलोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रतानंदा रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च प्रत्यक्ष परमेश्वरी इंद्राणी रूपा चंद्रशक्तिपरायणा सदा सम्मोहिनी देवी सुंदरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी परा ब्राह्मी स्थूल सूक्ष्म प्रवर्तिनी हितम सकल कल्याणी भोग मोक्ष प्रदायिनी महिषासुर संहर्त्री चामुंडा सप्तमातका वाराही नारसिंही च भीमा भैरव नादिनी श्रुति समुचित मेधा विद्या लक्ष्मी सरस्वती अनंता विजया परिणामास्तोका पराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हेमति अंबिका शिवा शिवा भवानी रुद्राणी शंकरात् शरीरिणी ऐरावत गजारूढ़ा वज्रस वरप्रदा ब्राह्मी कांच कामाक्षी कणन्मानिक नूपुरा त्रिपाद भस्प्रहरणा त्रिशरा रक्तलोचना शिवा च शिवरूपा च शिवभक्तिपरायणा मृत्युंजया महामाया सर्वरोग निवारिणी ऐन्द्री देवी सदा कालं शान्तिमाशु करोतु मे भस्मायुद्धाय विद्महे रत्नेताय धीमहि तन्नो सर्वरोगहरः प्रचोदयात् भस्मायुद्धाय विद्महे रत्नेताय धीमहि तन्नो सर्वरोगहरः प्रचोदयात् भस्मायुद्धाय विद्महे रत्नेताय धीमहि तन्नो सर्वरोगहरः प्रचोदयात् फलश्रुतिः एतत् स्तोत्रं जपे नित्यं सर्वव्याधिनिवारणं रणे राजभये शौर्ये सर्वत्र विजयी भवेत् ऐतर्नां बद्धैः दिव्यैः स्तुता शक्रेण धीमता आयु आरोग्यम् ऐश्वर्यम् अक्षय सम्पत्तिकारकं क्षयापस्मान् कुष्ठाजतापज्वरनिवारकं शतमावर्धेयस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्त्येत् सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलं राजावश्यं वाप्नोति सत्यमेव न संशयः लक्ष्मीकं जपेजस्तु साक्षात् देवीं स पश्यति त्रिकालं पठे नित्यं धनधान्यं च सम्पदा अर्धरात्रे पठे नित्यं मुच्यते व्याधिबन्धनात् ऐन्द्रस्तोत्रमिदं जपेत फलवर्धनं विनाशाय तु रोगानामृत्युं हरत्यत राजार्थी लभते राज्यं धनार्थी विपुलं धनम् इच्छाकामं तु कामार्थी धर्मार्थी धर्मं व्ययं विद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थी परमं पदम् इन्द्रेण कथितं स्तोत्रं सत्यमेव न संशयः ॐ शान्तिः 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 ॐ